Hello friends, I am Mr. Ravindra Bhalerao and I welcome you to my channel that is English for Learners. Dear students, in today's video we shall discuss one of the important activities and that is statement of purpose. What do you mean by statement of purpose? How the question will be asked on this topic and how to write its answers in a simple way. So all these things we shall discuss in today's video. Yes, one more thing is that if you are college going students, then this topic is very important for you. So let's discuss statement of purpose. But before watching this video, as usual I request you don't forget to subscribe my channel. Let's go. Here, what is statement of purpose? इस statement of purpose के बारे में आप क्या जानते हो? इसका क्या मतलब होता है? One definition is given here. Statement of purpose is an application made to university to seek admission to a particular course. एक one type of application होता है. अभी आप 12th standard में हो, आप कॉलेज में हो, 12th standard में हो, हायर एजुकेशन के लिए इफ़ यू वांट टू अप्लाई किसी यूनिवर्सिटी में किसी कोर्स के लिए अगर आप अप्लाई करते हो और उस अप्लाई करने से पहले आपको एक एप्लीकेशन लिखना पड़ता है. वन टाइप ऑफ एप्लीकेशन. यू हैव टू गिव योर पर्सनल इंफॉर्मेशन इन फॉर्म ऑफ एप्लीकेशन. उसी एप्लीकेशन को ही स्टेटमेंट ऑफ पर्पस कहा गया और ये 12th स्टैंडर्ड में 11th स्टैंडर्ड में इसके ऊपर क्वेश्चन पूछे थे. लेकिन इसका जो फॉर्मेट होता है वो एक अलग सा होता है. सो यहाँ पर एक दो एग्जाम्पल्स हमने ली है. सो दिस एग्जाम्पल्स आर वेरी इंपॉर्टेंट एंड दिस एग्जाम्पल्स आर टेकन फ्रॉम दिस नोट्स दैट इज द ज्ञान सागर नोट्स. It is very good notes, very simple language is used here. If you want to purchase these notes from online, you can contact here. Okay, so all right, let's see format of the statement of purpose. In this format, we have to write 4 to 5 paragraphs. Statement of purpose हमें 4 से या 5 पैराग्राफ में लिखना पड़ता है. In first paragraph, begin your introduction. फर्स्ट पैराग्राफ में शुरुआत में हमें हमारा इंट्रोडक्शन देना पड़ता है. टॉक अबाउट योर पर्सनल बैकग्राउंड, योर मेंटल मेकअप एंड योर एम इन लाइफ. इसके बारे में फर्स्ट पैराग्राफ में आप इंट्रोड्यूस करिए. देन सेकंड पैराग्राफ, यू शुड स्पीक अबाउट व्हाई यू विश टू ज्वाइन स्पेसिफिक प्रोग्राम और कोर्स और योर एरिया ऑफ इंटरेस्ट. यानी सेकंड पैराग्राफ में आपको मेंशन करना पड़ता है कि आपने यही कोर्स क्यों ज्वाइन किया है और आपका इंटरेस्ट क्या है, आपकी हॉबीज़ क्या है. यू हैव टू मेंशन इन सेकंड पैराग्राफ. एंड देन इन थर्ड पैराग्राफ, राइट अबाउट योर क्वालिटीज़ दैट वुड बी हेल्पफुल और सुटेबल फॉर दिस कैरियर गोल और ऑब्जेक्टिव. जो अपने कोर्स ज्वाइन करना चाहते हो और उस कोर्स से रिलेटेड आपकी कौन कौन सी क्वालिटीज़ है जिसके लिए आपके करियर में आपके जॉब के लिए ये बहुत सूटेबल है. आपकी जो क्वालिटीज़ है इसके बारे में मेंशन कीजिए. देन शो योर हॉबीज़ एंड एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ वुड बी हेल्पफुल और इन स्ट्रेंथन योर गोल्स. सो वॉट एवर योर गोल्स रिगार्डिंग टू दैट कोर्स. सो इस कोर्स से रिलेटेड जो भी आपकी हॉबीज़ है उसको यहाँ पर इस थर्ड पैराग्राफ में यू हैव टू मेंशन, इसका मेंशन कीजिए. एंड इन फोर्थ पैराग्राफ, मेंशन योर एक्सपीरियंस इन दिस फील्ड और एनी इंटर्नशिप और प्रोजेक्ट यू हैव डन. इस कोर्स से रिलेटेड आपने आपका जो भी कुछ एक्सपीरियंस होगा या कोई आपने प्रोजेक्ट बनाया होगा उसके बारे में लिखिए. देन यू कैन स्टेट समथिंग विच यू मेक्स यू आर डिस्टिंक्ट फ्रॉम अदर एप्लीकेंट्स. बाकी के एप्लीकेंट से आप किस तरह से बेटर हो, व्हाट इज़ योर एक्सपीरियंस. सो यू हैव टू राइट इन अ प्रॉपर वे. इस पैराग्राफ में आपको लिखना पड़ता है. एंड इन लास्ट पैराग्राफ दैट इज द कंक्लूडिंग पैराग्राफ, पूरे हम समरी उसमें लिख सकते हैं जैसे कि स्टेट हाउ एडमिशन टू दिस पर्टिकुलर कोर्स और यूनिवर्सिटी वुड बी बेनिफिशियल टू यू. इस कोर्स को ज्वाइन करने के बाद हाउ इट इज़ वेरी बेनिफिशियल टू यू. आपको किस तरह से फ़ायदा होने वाला है आपके करियर या आपके गोल से रिलेटेड, आपके जॉब से रिलेटेड. ओके, वो मेंशन कीजिए. हाउ यू लुक एट इट फ्रॉम अ लॉन्ग टर्म करियर पर्सपेक्टिव. यानी लॉन्ग टर्म करियर के पर्सपेक्टिव से ये आपके लिए कितना इंपॉर्टेंट है कोर्स ज्वाइन करना. सो ऑल दिस थिंग्स यू हैव टू मेंशन इन फिफ्थ पैराग्राफ. सो ऑल दिस इज कॉल्ड फॉर्मेट ऑफ द स्टेटमेंट ऑफ पर्पस. अभी हम एक्चुअल क्वेश्चन देखेंगे और उसका आंसर भी देखेंगे. राइट, लेट्स सी द क्वेश्चन. क्वेश्चन नंबर 1, यूनिवर्सिटी ऑफ बाथ यूके इज़ वन ऑफ द लीडिंग यूनिवर्सिटी फॉर द बिजनेस स्टडीज़. यूके में बाथ यूनिवर्सिटी जो बिजनेस स्टडीज़ के लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट यूनिवर्सिटी है. यू बिलोंग टू ए बिजनेस फैमिली.
अभी आप ये क्वेश्चन समझ लीजिए, आप एक बिजनेस फैमिली से बिलोंग करते हो, विश टू स्टार्ट योर ओन बिजनेस, कैरी फॉरवर्ड योर फैमिली बिजनेस इन फ्यूचर, जो फैमिली का बिजनेस है उसको आप कैरी फॉरवर्ड करना चाहती है, और इसी के लिए इन योर जूनियर कॉलेज यू हैव ऑप्टेड फॉर कॉमर्स, कॉमर्स साइड से आप हो, वेल इन योर स्टैंडर्ड 10th बोर्ड एंड एग्जामिनेशन यू मेड अ प्रॉफिट इन द स्टॉल यू हैड पुट अप इन द बिजनेस फेयर ऑर्गेनाइज्ड बाय योर स्कूल और कॉलेज। आपको ये एक्सपीरियंस भी जो अपने स्टॉल भी लगा है उसका भी हमें मेंशन करना है आपको। योर हॉबीज आर प्लेइंग क्रिकेट, हॉकी, यू गेट अ लॉन्ग वेल विथ पीपल, सो यू वांट टू ज्वाइन दिस यूनिवर्सिटी। अभी आपके बारे में थोड़ा सा इंट्रोडक्शन इस क्वेश्चन में दिया है। अभी देखिए 5 पैराग्राफ्स में फॉर्मेट में ये स्टेटमेंट ऑफ पर्पस किस तरह से लिखा जाता है। फर्स्ट ऑफ ऑल यू शुड गिव द टाइटल स्टेटमेंट ऑफ पर्पस। फर्स्ट पैराग्राफ देखिए, इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ जैसे हमने कहा था, आई बिलोंग टू अ बिजनेस फैमिली, जैसे मेंशन करना है, आई बिलोंग टू अ बिजनेस फैमिली, माई फादर एंड अंकल्स आर इन अ डिफरेंट बिजनेस, आई हैव बीन गेटिंग द प्रिंसिपल्स एंड ट्रिक्स इन बिजनेस सिंस चाइल्डहुड। यानी बिजनेस फैमिली की वजह से मुझे किस तरह से सब ट्रिक्स पता है मेरी चाइल्डहुड से, ये आप लिख रहे हो। सो आई हैव डिसाइडेड टू बी अ सक्सेसफुल बिजनेसमैन इन माई लाइफ। सो इंट्रोडक्टरी दिया। सेकेंड पैराग्राफ में आप इस तरह स्टार्ट कर सकते हैं, आई एम ईगर टू एक्सप्लॉइट, एक्सप्लॉइट मीन्स टू यूज माई हंगर फॉर द कोर्स ऑफ बिजनेस मैनेजमेंट, सो आई वॉन्ट टू बिकम अ बिजनेस मैनेजमेंट, इसमें मुझे करियर करना है। आई विश टू ज्वाइन दिस कोर्स बिकॉज आई वॉन्ट टू स्टार्ट माई ओन बिजनेस लाइक माई फादर एंड अंकल्स, हाउएवर आई वुड लाइक टू कैरी फॉरवर्ड माई फैमिली बिजनेस, माई फैमिली बिजनेस को मुझे कैरी फॉरवर्ड करने के लिए मुझे ये कोर्स ज्वाइन करना है। नेक्स्ट पैराग्राफ इस तरह से लिख सकते हैं, आई एम ए स्टूडेंट ऑफ वेल नोन स्कूल, आपके स्कूल के बारे में, कॉलेज के बारे में, आपने क्या किया उसके बारे में आपको मेंशन करना है। माई स्कूल हैज़ मेड एन ऑल राउंड डेवलपमेंट ऑफ मी, आई हैव पार्टिसिपेटेड इन को करिकुलर एक्टिविटीज़, आई हैव बीन अ ग्रेट इंटरेस्ट इन हॉकी एंड क्रिकेट। जो क्वेश्चन में दिया है आपके इंटरेस्ट क्या है, हॉबीज़ क्या है, उसको आप यहाँ पर मैंशन करते हैं, लेकिन आपके लिखते समय मैं ये किया है, यू हैव टू यूज आई। Okay, let next paragraph. I easily understand the temperament of a bowler while playing a cricket. Cricket बारे में आप लिख रहे हो जो कि आपकी हॉबी है. It will be useful to study the temperament of market. So how your hobby is connects, there is a connection to your business से connection किस तरह हॉबी का किया ये आप लिख सकते हो. It will be useful to study the temperament of market on the occasion of Diwali season. अपने क्या एक्सपीरियंस है आपके इसके बारे में बताइए स्कूल लेवल पे. I open up my own firecracker stall. It is my experience for the last 10 years. Okay. I have opted for commerce in junior college. I have studied accountancy, commerce, organization, mathematics, business organization. So all these things I have studied. You can mention like this. I got all the basic information of the business management during 2 years in junior college. I had put a stall in the business fair of my college. I made profit in that stall. I got good percentage in standard 10 and 12. Board examination. I get along well with people. So in this way you can mention about yourself. Next you can write like this, I believe that I am a suitable candidate for this course. ये सब आपको एक्सपीरियंस बताने के बाद हाउ यू आर सुटेबल फॉर दिस कोर्स यू कैन राइट. आई हैव बीन प्रैक्टिकल थिंकर, आई हैव रिसीव्ड बेसिक स्किल्स ऑफ बिजनेस फ्रॉम माई फैमिली and I believe that University of Bath is one of the leading universities for business studies. I think that it will be satisfy my hunger of study in business. Okay, so effective way in a proper format you have to write like this. Management, it is the university where I will get everything I need. I hope to secure admission to that. I will provide me with an opportunity to fulfill my dreams. So your answer is completed here. So इतना मिनिमम आपको लिखना पड़ेगा. That is called statement of purpose. Okay, let's say the one more question. Question number 2. COEP College of Engineering is one of the leading college for engineering studies. आप इंजीनियरिंग कॉलेज के लिए अप्लाई कर रहे हो. यू विश टू ज्वाइन दिस कॉलेज. ओके, यू वांट टू चूज सिविल इंजीनियरिंग कोर्स. क्यों आप ये कॉलेज ज्वाइन करें कि इंजीनियरिंग का कॉलेज है और सिविल इंजीनियरिंग आप चूज़ करना चाहते हैं करियर बोल के. यू लाइक टू प्रिपेयर डिज़ाइन एंड मेक अ कंस्ट्रक्शंस. इन योर जूनियर कॉलेज यू हैव ऑप्टेड फॉर साइंस साइड से आप साइंस स्ट्रीम से आप हो. यू स्कोर्ड वेल इन MHCT एंड यू लाइक टू विजिट डिफरेंट कंस्ट्रक्शन साइट्स.
योर हॉबीज़, आपकी साइंस स्ट्रीम्स, इसके बारे में यहाँ पर क्वेश्चन में दिया है। अभी देखिए आंसर, स्टेटमेंट ऑफ पर्पस, इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ। आई एम फ्रॉम कॉमन फैमिली, माई फादर इज़ अ टीचर, ही हैज़ कल्टिवेटेड डिज़ायर फॉर मी टू बी एन इंजीनियर, सिंस देन आई विश टू बी अ सिविल इंजीनियर। मेरी फैमिली की होप है और मेरे भी इंटरेस्ट है, इसलिए आप एक्सप्लेन कर सकते हो। नेक्स्ट पैराग्राफ, आई विश टू बी ए सिविल इंजीनियर टू कंप्लीट माई फादर्स विश। However, I want to set up my own construction company. I would like to build houses for other people. Moreover, I want to provide comfortable and reasonable affordable houses for common people. So इस एम से मुझे इंजीनियरिंग ज्वाइन करना है। सो इस तरह से आप एक इमोशनल अटैचमेंट भी यहाँ पर दे सकते हो। आई एम ए स्टूडेंट ऑफ वेल नोन स्कूल, माई स्कूल हैज़ मेड वर्सटाइल डेवलपमेंट इन मी, आई हैव पार्टिसिपेटेड इन को करिकुलर एक्टिविटीज during my school life. I have participated in science exhibition, I have prepared model of an ideal village. So what is your experience, how you were in school level? You have to write like this. I got the first prize for the model at state level science exhibition. I have been participating in fort making competition every year during Diwali. I like to prepare different designs and make constructions according to those designs. ये भी यहाँ पर आपके हॉबीज़, इंटरेस्ट के बारे में लिख सकते हो। नेक्स्ट, आई हैव ऑप्टेड फॉर साइंस इन जूनियर कॉलेज, साइंस स्ट्रीम से आप हो। आई हैव स्टडीड फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड मैथमेटिक्स। आई हैव अंडरस्टूड ऑल बेसिक concepts of those subjects, they are useful for engineering. Next, you can mention, however, I scored 99% in MHCET examination. I think that I am a suitable candidate for this course. I have all basic information about the course. I believe that COEP is the best choice for my course. It will satisfy my hunger of knowledge. However, it will develop a wide approach in me about civil engineering. I hope to secure admission that will provide me with the opportunity to fulfill my dreams. So, इस तरह से in a simple way, we have to write answer that is called statement of purpose. So friends, I wish you might have liked this video. If you liked it, please share it, and if you have any suggestions for me, write in comment box. Wish you good day, take care, thank you very much.